विकी जी ऑन योर लेफ्ट। विकी जी, हाँ जी सर। सो जब पॉलिटिक्स की दुनिया से बुलावा आता है आपको तो क्या रिएक्शन होता है आपका? मुझे तो आया नहीं पॉलिटिक्स से बुलावा। इंदिरा गांधी फिल्म जी में? ने, हाँ फिल्म पे का बात कर रहा हूँ मैं। ओह सैम बहादुर को आता है पॉलिटिक्स का बुलावा। सर, इस फिल्म में ना एक लाइन है जो टीजर में भी है कि पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्मी ही मेरी लाइफ है। सो ये मेरे लिए पॉलिटिक्स बेस्ड फिल्म नहीं है, ये आर्मी बेस्ड फिल्म है। और जब भी आर्मी बेस्ड फिल्म से बुलावा आता है तो वो मेरा एक सॉफ्ट साइड है जहां मैं हमेशा टेम्प्टेड होता हूं, बट यू नो when it's about Field Marshal Sam Manekshaw, who's one of the most celebrated people from the Indian Army, then it's very hard कि आप ऐसे opportunity को जाने दोगे। तो it's not the politics, it's the army. एंड इंदिरा गांधी जी को किस नाम से बुलाते हैं आप इस फिल्म में? टीजर तक तो मैडम, बाकी आप फिल्म देख के देखिएगा। एंड रोनी जी, क्लैश के बारे में आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, एनिमल एंड साम बहादुर, कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितना प्रेशर होता है आपको? फर्स्ट 1 तारीख को 2 फिल्में आ रही हैं, बड़ी फिल्में, आप अगर कुछ बता सकें। Ronnie, that question is on the 2 releases on the same day. Clash. Yeah, Clash. I got that. Thank you. Dekhiye, 2 things on that. Firstly, I think if you go back and look at the social media, we announced 1/12/23, I think almost a year back. Oh, sorry, almost a year. Yeah, 1 year back on 1/12/22, we announced 1/12/23. That's one part. Second, I think for everyone here, this is it's a very purani baat ho gayi yaar, ki filmi mein always you talk about clashing, because you don't look at that in real life. You don't figure out today where Flipkart and Amazon will have the $1 billion days on the same days. Actually, everyone comes out and wants to consumer spend even more. You look at anything and everything in life, clash is not about anything else. This is a very old world, sorry to say, thinking in cinema here. Actually, audiences come out more. They like multiplicity of choice. Suddenly, when there's a TV screen and promotions that are very active in a particular season, you go there. So I think it's a very, very small way to look at the fact that films are clashing, because it's a whole world out there. Today, everyone is clashing with Instagram, you're clashing with Netflix, you're clashing with going out, you're clashing with so many other things. The last thing you want to worry about is clashing with anything else. Ronnie, this side to the right, to your right. People are flocking into the theaters, you know. It's a very good time. What are your expectations, by the way? Sorry, what are our expectations for? Theatrical release, because people have started flocking into the theaters, you know, My expectation is recently. that there are about 63 empty seats here, and they should all be full. Hello, check. And Meghna, are you depicting all the wars that he represented in the decade of his service? 4 decades, actually. Yeah, 4 decades. I hope so. Okay. And what responsibilities, Vicky, with this character? Lot of expectations again. It's a huge responsibility. Along with being a huge honor, it's a massive responsibility. Firstly, to wear the Indian Army uniform, but then if it's got a nameplate of Sam Manekshaw, it's a massive responsibility. And I would like to also take the opportunity to thank the ADGPI and the Indian Army for their support. उन्होंने बहुत support किया हमें through the filming. But every time I would meet them, they would say, ढंग से करना. He's our best guy. So you know that pressure is always there, and I used to always be like, नहीं हम पूरी जान लगा रहे हैं. So we have our fingers crossed, and हमने पूरी जान लगाई है. And you know, but to answer your question, yes, the responsibility is the most it can be as an actor when you're wearing a uniform of Sam Manekshaw. विकी सर, मेरा सवाल आपसे है. हाँ जी. जब भी सिनेमा के रुपीले पर्दे पर मैं आपको एक जवान की भूमिका में देखता हूं, तो मेरे मन में भी ये भावना जागती है कि मैं भी जाके बॉर्डर पे लड़ाई करूं. हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग होंगे जब आपके सिनेमा के रुपीले पर्दे पर जवान की भूमिका निभाते वक्त देखते हैं तो ये भावना आती है. क्या आपको लगता है कभी आप एक्टर नहीं होते तो क्या बॉर्डर पे होते? देखिए, जब मुझे
रोल्स के द्वारा या फिल्मों के द्वारा इंडियन आर्मी से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम रियल हीरोज हैं, पर वो रियल हीरोज हैं. और हमारे देश के मतलब वो दे आर सुपर हीरोज, यू नो. तो जो आर्मी की जो यूनिफॉर्म पहनते हैं और उनसे जब बात करता हूँ, आई ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड. आई ऑलवेज फील लाइक देयर इज सो मच मोर टू डू. तो मैं हमेशा ये तो सोचता हूँ कि काश ड्यूरिंग माई टीनेज ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस होता मेरे आसपास कि मैं सोच सकता कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है जो मैं कर सकता हूँ. पर आई ऑलवेज रियली गेट टेम्पटेड दैट यू नो. और कई बार जब जैसे इस फिल्म के दौरान भी कई कैंट एरियाज में कई रेजिमेंट्स के साथ हमें वक्त बिताने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला. तो जब भी उनके साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि यार बस इनके साथ ही रहूँ, यहीं बसा रहूँ. क्योंकि देयर इज अ सर्टेन डिसिप्लिन एंड एक वे ऑफ लिविंग है आर्मी की, विच इज जस्ट सो इंस्पायरिंग एंड सो फैसिनेटिंग, जो हमें लगता है कि यार इसका 10% भी होना चाहिए कम से कम हमारे अंदर. सो इट्स ऑलवेज इंस्पायरिंग. तो आई रियली इन अ डिफरेंट यूनिवर्स, इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, आई रियली होप कि ऐसा होता रियलिटी, कि आई वुड हैव बीन अ रियल हीरो रादर देन अ रियल हीरो. बट हु नोस. Hi, Meghna ji here, Runa from Web Dunia. Hi. Here. No problems, no problems. Yeah. Hi, Meghna ji, I really love Sam Bahadur ji. जितना पढ़ा है, जितनी सीरीज की है मैंने अपने कंपनी के लिए, इंटरव्यूज की, मेरा दिल बहुत दुखा था जब एपीजे कलाम साहब को उन्होंने बोला था मेरी बची हुई पेंशन वापस या दिलवा दीजिए. इस नहीं, सीन उन्होंने नहीं बोला था. माफ कीजिए, फिर अगर वो उन्होंने खुद किया था, प्रेसिडेंट कलाम ने खुद किया था, उन्होंने नहीं मांगा था. माफ कीजिए फॉर दिस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. Okay. इस सीन को बनाने में, क्या ये सीन है और बनाने में आपको किन सेंसिबिलिटीज का ध्यान रखना पड़ा है? क्योंकि दो बहुत बड़े सुपर हीरो बोल सकती हूँ हमारे देश के सामने बैठे हैं. देखिए, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जो जिंदगी है वो 2 फिल्मों में हो सकती है. एक जो उनकी एक्टिव मिलिट्री लाइफ है, फ्रॉम द टाइम ही जॉइन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी टू हिज रिटायरमेंट एज फील्ड मार्शल, एंड देन आफ्टर दैट टिल हिज लास्ट डेज. I could make only one film, so I have one part of his life in the film. Having said that, I think हमारा सबका नजरिया ये था कि this is a life we want to celebrate. Yes. We don't want to be sympathizing with him because there is a lot more to him. उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, ना कि आपको अफसोस करना हो. अफसोस करने वाली कुछ ही शायद चीजें होंगी. तो हमको हमारा नजरिया सही रखना है कि हमको उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट करना है कि उनकी जिंदगी के कुछ हादसों को पर अफसोस करना है. वी हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज लाइफ विद सैम बहादुर. थैंक यू, थैंक यू. विकी, आप रेशन को मौका देता है, 12th के बाद आप जाके इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं. आपका खुद का पर्सनल क्या सोच है, क्योंकि आप ऐसे कई सारे रोल निभा चुके हैं? See, the thing is that I feel is apt for another forum because it's a political discussion. So I would like to stick it to the film right now and to the man, the legend that we have, Sam Manekshaw, because I would love to answer this question because that's my personal take. And I would do that when I'm having a personal interview with you, which is not related to Sam Manekshaw. You know? Meghna, hi. Vicky, lovely teaser, no doubt about it. Meghna, when you're making a film on a person like Sam Bahadur, you are taking, of course, the anecdotes and the incidents from his real life. When you portray a real life character, where do you draw the line? Are there any challenges you face that where you know that you have to stop and then resume telling the life story? It depends on the life and it depends on your intention. What is it that you're trying to do exactly? For a life like Field Marshal Sam Manekshaw, we have tried to put out everything that we could because his life is so full and large and actually cinematic that I feel that हम और भी कर सकते थे, but I had a duration limit कि इतने घंटे में फिल्म खत्म करनी है. Otherwise we could have gone on a little longer, but I think the only place where I would even think of a line is when it comes to the dignity of the character that you're portraying. That cannot be compromised. No matter what incident you are portraying of his life or her life, and this I would think would apply to any real life incident or character, that the dignity of the incident or the person that you are talking about
cannot be compromised. And that comes from the intention of making the film. Why are you making the film? Right? So, yeah. Thank you.